You're very enthusiastic. You sit in the front. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radhika Raman Jaya Radhika Raman Jaya Radhika Raman Jaya Radhika Raman Radhika Raman Jaya Radhika Raman Jaya Radhika Raman Jaya Radhika Raman Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Prabhupada 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 Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Ananta Lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Astitara Satashishiman Shilabai Charnaravinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Astitara Satashishiman Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsakah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gogopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Mathur Dhama Ki Jai Navadvip Mayapur Dhama Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Shri Jagannath Puri Dhama Ki Jai ISKCON Punjabi Bagh Ki Jai Book Distribution Ki Jai Prasadam Distribution Ki Jai All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna.
Hare Krishna. So we are highly fortunate to have the association of Her Grace Rukmini Mataji. Rukmini Mataji is Srila Prabhupada's disciple and got initiated from Srila Prabhupada. तो हम सबका परम सौभाग्य है हमारे बीच में है आज हर ग्रेस रुक्मिणी माता जी। तो रुक्मिणी माता जी अधिकांशतः भक्त जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो कि जुड़ी सैन फ्रांसिस्को से और प्रभुपाद से दीक्षा ली उन्होंने मॉन्ट्रियल में, बॉस्टन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस से कई मंदिरों में माता जी ने पुजारी की सेवा की है। 1972 में श्रील प्रभुपाद जी माता जी को मायापुर भेजा, वहाँ पर पुतले बनाने की कला को सीखने के लिए, ताकि वो थियस्टिक एग्जीबिशंस के लिए ऐसे पुतले बना सकें। माता जी अभी भक्ति सेंटर न्यूयॉर्क में बोर्ड मेंबर हैं और भक्ति विधान कॉलेज रादेश बेल्जियम में भी माता जी जो है वो कई रिट्रीट्स लेती है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में, जिसमें वो अलग अलग वर्कशॉप्स पे पढ़ाती हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है माता जी हमारे बीच में हैं। आइए माता जी का हम स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे सब भक्तों से प्रार्थना है कृपा करके अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए ताकि वो क्लास में बाधा ना पैदा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, thank you so much for the very warm invitation. I'm very grateful to be here. And I want to welcome also Daivik, Damodar Daivik, who is also a new member of the community. Have you met him? He's here with his mama. Where is Sakshi? Sitting? So, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित मिला आज की कथा लेने के लिए, और मैं साथ साथ में एक भक्त का और भी स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे बीच में है, जिनका नाम है देविक। Yes. देविक दामोदर। Yes, and this is his father. Okay. देविक। So देविक प्रभु का भी हम स्वागत करते हैं। And जो पंजाबी भक्त समुदाय के नए सदस्य हैं। And he's wearing saffron. But he's disguised with a pink sweater over the saffron because the family was very afraid the brahmacharis would steal him. So तो उन्होंने जो है वो भगवा पहना है लेकिन दिखता पिंक है, लेकिन क्योंकि उनके परिवार को डर था कि इस्कॉन के ब्रह्मचारी उनको ब्रह्मचारी न बना दें, इसलिए जो है वो There he is. This is the future hope. Everyone bless him. Hari Hari Bol. Everyone bless him unlimitedly. He is the future hope for Punjabi Bagh ISKCON. May Prabhupada and all our acharyas, and Radhika Raman, Krishna Balaram, and Jagannath Subhadra Baladev all bless him unlimitedly. तो सब भक्त लोग जो है इस नए सदस्यों को अपना आशीर्वाद दें। ये इस्कॉन पंजाबी बाग क्या होने वाले आगे भविष्य हैं और ये सुंदर मधुर भक्त बन के बड़े हों। हरि बोल। हरि बोल। Jai. So reading from Srimad Bhagavatam could this mic be turned down a bit? There's a bit of an echo like there was the other night when Sachinandan Swami was speaking. Yeah. Okay. So reading from Caitanya Caritamrita, Madhya Lila, chapter 16, text 245 through 264. तो हम श्री चैतन्य चरितामृत में से पाठ कर रहे हैं मध्य लीला अध्याय संख्या 16 और प्यार संख्या 245 से 264 तक। Okay. इहा प्रभु एकत्र करी सब भक्तगण, इहा प्रभु एकत्र करी सब भक्तगण, अद्वैता नित्यानंदादि यत भक्तजन, अद्वैता नित्यानंदादि यत भक्तजन, सब आलिंगन करी कहिना गोसानी, सब आलिंगन करी कहिना गोसानी, सबे क्या देहा अमी नीला चले जाए। Please chant.
Vaishnavis, please. माता जी सबे आज्ञा देह आमी लीला चले जाई एकत्र करी सब भक्त गण अद्वैत नित्यानंद आदि सत भक्त जन सब आलिंगन करे Ihan, here at Shantipur. यहाँ शांतिपुर में Should I say the English? Should I say the word for word? Yes? Okay, should I? Maybe you should just say it in Hindi. Okay. प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु एकत्र करी एक जगह इकट्ठे करके सब भक्तगण सब भक्तों को अद्वैत नित्यानंद आदि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु आदि यत भक्त जन सभी भक्तों सब आलिंगन करी सबका आलिंगन करके कहे न गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबे तुम सब आज्ञा देह मुझे आज्ञा दो आमी मैं नीलाचल जगन्नाथपुरी जा सकूं. Translation. Meanwhile, at Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu assembled all his devotees, headed by Advaita Acharya and Sri Nityananda Prabhu, embraced them all and asked their permission to return to Jagannath Puri. तभी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु आदि को एकत्र किया और उन सबका आलिंगन करने के बाद उनसे जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी. Because he had met them all at Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested all the devotees not to go to Jagannath Puri that year. चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में सबसे मिल चुके थे, अतः उन्होंने सारे भक्तों से विनती की कि वे इस वर्ष जगन्नाथपुरी न आएं. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I shall certainly go to Vrindavan from Jagannath Puri. If all of you give permission, I shall return here again without difficulty. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन अवश्य जाऊंगा. यदि आप सभी लोग मुझे अनुमति दें, तो मैं बिना किसी कठिनाई के यहाँ फिर आ जाऊंगा. Clasping the feet of his mother, Sri Chaitanya Mahaprabhu very humbly requested her permission. Thus she gave him leave to go to Vrindavan. महाप्रभु ने अपनी माता के चरण पकड़कर उनसे विनय पूर्वक अनुमति मांगी. उन्होंने महाप्रभु को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी. Srimati Sachi Devi was sent back to Navadvip, and the Lord and his devotees started for Jagannath Puri Niladri. श्रीमती सची देवी को नवद्वीप वापस भेज दिया गया और महाप्रभु अपने भक्तों सहित नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए. The devotees who accompanied Sri Chaitanya Mahaprabhu rendered all kinds of service on the way to Nilachala, Jagannath Puri. Thus in great happiness the Lord returned. श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने वाले भक्तों ने नीलाचल जगन्नाथपुरी के रास्ते भर उनकी सभी प्रकार से सेवा की. इस तरह महाप्रभु परम प्रसन्नता पूर्वक लौट आए. When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived in Jagannath Puri, he visited the temple of the Lord.
News then spread all over the city that he had returned. जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के मंदिर का दर्शन किया। फिर तो सारे नगर में यह समाचार फैल गया कि महाप्रभु लौट आए हैं। All the devotees then came and met the Lord with great happiness. The Lord embraced each of them in great ecstatic love. तब सारे भक्तों ने आकर परम सुखपूर्वक महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु ने भी उन सब का एक एक करके प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। Kashi Mishra, Ramananda Rai, Pradyumna, Sarvabhauma Bhattacharya, Vaninath Rai, Sikhi Mahiti, and all the other devotees met Sri Chaitanya Mahaprabhu. काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न, सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, शिखी माहेती तथा अन्य सारे भक्त भी महाप्रभु से मिले। Gadadhar Pandit also came and met the Lord. Then, before all the devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to speak as follows. गदाधर पंडित भी आए और महाप्रभु से मिले। तब महाप्रभु सभी भक्तों के समक्ष इस प्रकार बोले। It was my desire to go to Vrindavan through Bengal in order to see my mother and the river Ganges. मैंने अपनी माता तथा गंगा नदी का दर्शन करने के लिए ही बंगाल से होते हुए वृंदावन जाने का संकल्प किया था। Thus I went to Bengal, but thousands of devotees began to follow me. इस तरह मैं बंगाल गया, लेकिन हजारों भक्त मेरे साथ चल पड़े। Many hundreds of thousands of people came to see me out of curiosity, and due to such a large crowd, I could not travel very freely on the road. लाखों लोग उत्सुकतावश मुझे देखने आए और ऐसी भीड़ हुई कि रास्ते में मुक्त होकर चलना भी कठिन हो गया। Indeed, the crowd was so large that the house and the boundary walls of the house where I stayed were destroyed, and wherever I looked, I could see only large crowds. भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैं जिस घर में रुका था वह घर तथा उसकी चार दीवारें टूट फूट गई और मैं जिधर देखता उधर विशाल जन समूह ही दिखाई पड़ता था। Amazing how popular he was, huh? Wow. तो ये आश्चर्यजनक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कितने विख्यात थे, कितने प्रसिद्ध थे। With great difficulty, I went to the town of Ramakeli, where I met two brothers named Rupa and Sanatan. मैं बड़ी मुश्किल से रामकेली गांव गया, जहां मुझे रूप तथा सनातन दो भाई मिले। These two brothers are great devotees and suitable recipients of Krishna's mercy, but in their ordinary dealings, they are government officials, ministers to the king. ये दोनों भाई महान भक्त तथा कृष्ण कृपा के समुचित पात्र हैं, किंतु सामान्य तौर पर वे हैं सरकारी अधिकारी, राजा के मंत्री। Srila Rupa and Sanatan are very much experienced in education, devotional service, intelligence, and strength, yet they think themselves inferior to straw in the street. श्रील रूप तथा सनातन शिक्षा, भक्ति, बुद्धि तथा बल में अत्यंत अनुभवी हैं, फिर भी वे अपने आप को सड़क के तिनके से भी नीच मानते हैं। Indeed, the humility of these two brothers could even melt stone. Because I was very pleased with their behavior, I told them, although you are both very much exalted, you consider yourselves inferior, and because of this, Krishna will very soon deliver you. निस्संदेह इन दोनों भाइयों के दैन्य से पत्थर पिघल सकता था। उनके आचरण से तुष्ट होकर मैंने उनसे कहा, यद्यपि तुम दोनों उच्च कोटि के हो, किंतु अपने आप को निम्न मानते हो, इसीलिए कृष्ण शीघ्र ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। Such purport by Srila Prabhupada. तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। Such are the qualifications of a pure devotee. Materially, he may be very opulent, experienced, influential, and educated. But if one still thinks himself lower than straw in the street, one attracts the attention of Sri Chaitanya Mahaprabhu or Lord Krishna. Although Maharaj Prataparudra was a king, he took up a broom to cleanse the road for Lord Jagannath's Rath chariot. Because of this humble service, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased with the king, and for that reason the Lord embraced him. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu's instructions, a devotee should never be puffed up by material power.
He should know that material power is the result of one's past good activities, karma, and is consequently transient. At any moment, all one's material opulence can be finished. Therefore, a devotee is never proud of such opulence. He is always humble and meek, considering himself lower than a piece of straw. Because of this, the devotees are eligible to return home back to Godhead. शुद्ध भक्त के गुण ही ऐसे होते हैं। शुद्ध भक्त के गुण ही ऐसे होते हैं। भौतिक दृष्टि से कोई कितना ही ऐश्वर्यवान, अनुभवी, प्रभावशाली तथा शिक्षित क्यों न हो, किंतु यदि वह अपने आप को रास्ते में पड़े तृण से भी हीन मानता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। महाराज प्रताप रुद्र ने राजा होते हुए भी हाथ में झाड़ू लेकर जगन्नाथ रथ के लिए मार्ग बुहारा। इस विनीत सेवा के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु राजा पर अत्यंत प्रसन्न हुए और इसीलिए उन्होंने राजा का आलिंगन किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार भक्त को भौतिक शक्ति पाकर कभी भी फूल नहीं जाना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शक्ति पूर्व पुण्य कर्मों का फल होता है, फलतः वह नश्वर होता है। किसी भी क्षण मनुष्य का सारा भौतिक ऐश्वर्य समाप्त हो सकता है। इसीलिए एक भक्त कभी भी ऐसे ऐश्वर्य पर गर्वित नहीं होता। वह सदैव विनीत तथा दीन बना रहता है और अपने आप को तृण के समान हीन मानता है। इसके कारण भक्तगण भगवत धाम वापस जाने के पात्र होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we see in these verses, Lord Caitanya, he was desiring so much to go to Vrindavan. So many times he tried to go to Vrindavan and he failed, and then again he tried. And there's a great lesson here, that the mood for entering Vrindavan is a mood of humility. That point of humility is being discussed in this beautiful purport. इन श्लोकों के अंदर हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कितने अत्यधिक उत्सुक और उत्साहित थे श्री वृंदावन धाम जाने के लिए। अनेक बार उन्होंने प्रयत्न किया वृंदावन जाने के लिए, और ये इन श्लोकों का केंद्र बिंदु है। और यहाँ पर वृंदावन जाने के भाव मूड को सीखने की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। So in these verses we hear Lord Caitanya praising Rupa and Sanatan. They were new to the community, but Lord Caitanya was praising them so highly. तो चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों के अंदर हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों भाई रूप और सनातन का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि उस समय ये दोनों भक्त इस समुदाय के अंदर नए हैं, लेकिन किस प्रकार महाप्रभु उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। And Lord Caitanya did not go to Vrindavan at this time because he took the advice of Sanatan, who said, don't go to Vrindavan with many followers following you, like a magician, like some kind of a magician. So taking the instruction of Sanatan Goswami, Lord Caitanya did not go to Vrindavan at that time. तो और ये भी हम देखते हैं कि इस बार महाप्रभु जब बंगाल के रास्ते से वृंदावन गए थे, तो वे आगे वृंदावन नहीं गए, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने उन्हें सलाह दिया था
कि इतने सारे लाखों लोगों के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। ऐसे लगता है कोई जादूगर है जो अपनी जादूगरी से लोगों को आकर्षित करके वृंदावन लेके जा रहा है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी की सलाह लेकर के, का आदेश लेकर के, को महत्व दे करके श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर नहीं गए। Jai Krishna Balaram, Shishi Radhika Raman, Jagannath Subhadra Baladev. So this beautiful purport says that their humility could melt stone. Although they were so exalted government ministers, they considered themselves inferior. And because of this, Lord Krishna would deliver them and us, if we're humble like that, very soon. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि इन दोनों भाइयों के दैन्य से, कि नम्रता से पत्थर भी पिघल सकता है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि क्योंकि आप दोनों उच्च कोटि के हो, क्योंकि आपने अपने आप को निम्न मानते हो, इसलिए कृष्ण आप दोनों भाइयों का उद्धार करेंगे। So another point that's very beautiful here is just see how sensitive Lord Chaitanya was to the feelings of Sachi Mata, his mother, that she asked him to make his headquarters in Puri rather than so far away in Vrindavan, so he followed her order. तो और इन श्लोकों के अंदर हम एक और बात भी देखने के लिए है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता शची देवी की भावनाओं को लेकर कितने संवेदनशील थे, कितने सेंसिटिव थे, और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वृंदावन को अपना मुख्यालय न बना करके श्री जगन्नाथपुरी को अपना मुख्यालय बनाया। And in one place in the Caitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says that Lord Chaitanya was the greatest devotee of mothers. श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को मातृ भक्त शिरोमणि, कि जो माताओं के भक्त में जो शिरोमणि है, इस नाम से संबोधित करते हैं। So, I have to say, we see that in traditional Indian culture, and it's so beautiful. That's often not there in the West. So, thank you for that. तो हम ये काफी बार देखते हैं कि भारत की भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो माताओं के प्रति जो संवेदनशीलता है, जो आज्ञाकारिता है, माताओं के प्रति जो सम्मान की भावना है, ये भारतीय संस्कृति में देखी जाती है, जो अधिकांशतः पाश्चात्य संस्कृति में नहीं देखी जाती। And he was also so sensitive to the advice of Sanatana Goswami. They were not insiders yet, and he took their advice. Don't go to Vrindavan like a magician, followed by so many thousands of people. हालांकि इस समय तक सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो हैं अभी तक कम्युनिटी के समुदाय के सदस्य नहीं बने हैं, लेकिन महाप्रभु ने उनकी इस सलाह को कि आप वृंदावन मत जाइए लाखों लाखों लोगों को साथ लेकर के एक जादूगर के समान बड़ी गंभीरता से लिया उन्होंने। So Srila Prabhupada also took the advice once from an outsider, from a librarian who told him, people throw magazines away, you should write books. श्रील प्रभुपाद ने भी इस प्रकार एक बाहरी व्यक्ति की सलाह मशवरे को बड़ी गंभीरता से लिया। एक लाइब्रेरियन, एक पुस्तकालय के अधीक्षक ने प्रभुपाद जी को संदेश दिया था भारत के अंदर कि आप ये पत्रिकाएं क्यों लिख रहे हो, आपको पुस्तकें लिखनी चाहिए, जिल्द वाली पुस्तकें, खासकर हार्ड बाउंड पुस्तकें वो लिखनी चाहिए, क्योंकि जो पत्रिकाएं हैं तो लोग पढ़ते हैं और फेंक देते हैं। So today is Christmas, and I know in India everyone is very happy to celebrate yet another festival. तो आज क्रिसमस है और भारत में भी लोगों को मौका मिल रहा है एक त्योहार मनाने का, तो लोग बड़े खुश होते हैं एक और उत्सव मनाने के। And once Srila Prabhupada said, I could give you a festival for every day. प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि मैं आपको प्रत्येक दिन के लिए एक उत्सव दे सकता हूँ, साल के 365 दिन। Yeah, so, but, I want to make the point that Christmas is not just about Santa Claus and the elves and Christmas trees and giving presents like some kind of an imitation Diwali. It's not about that. तो क्रिसमस केवल सेंटा क्लॉस या जो क्रिसमस ट्रीज या उपहार देने की जो प्रक्रिया या सब देखते हैं, तो ये कोई एक दूसरे दीपावली नहीं है। केवल ये त्योहार केवल इन्हीं आदान प्रदान तक या इन प्रकार की तक सीमित नहीं है। Did you say Santa Claus and the elves? Yes. Okay. Okay, good. We don't want to forget him. So,
Yeah, so it's actually the celebration of a great, it's a celebration of reverence for a great pure devotee of God who was actually a revolutionary bhakta. तो ये जो क्रिसमस है ये एक भगवान के क्रांतिकारी भक्त का आविर्भाव दिवस है, शुद्ध भक्त का. And just as we see in these verses of Caitanya Caritamrita, how immensely popular Chaitanya Mahaprabhu was, right? और इन श्लोकों से हम देखते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं. One outside scholar who's not part of our ISKCON said that he was amazed that there, I forget the number, I wish I could remember, but there were something like 9 or 10 or 15 contemporary biographies of Lord Chaitanya written during his time. तो किसी एक लेखक ने ऐसा बोला, उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन समय के अंदर ही, एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान, लेकिन कम से कम 10 से लेकर 15 तक श्री चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफीज या कह सकते हैं जीवनियां जो हैं उपलब्ध थी उस समय. महाप्रभु इतने प्रसिद्ध थे. And he was saying, whereas there were only maybe 2 written of Shankaracharya, Ramanuja, Madhvacharya, only maybe 2, 3. और उसके विपरीत अगर हम देखें तो श्रीपाद शंकराचार्य, श्रील रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य के लिए 2 या 3 जीवनियां ही उपलब्ध रही हैं, कम से कम उनके समकालीन समय में. So what a deep impression Lord Chaitanya must have made on his contemporaries, right? तो महाप्रभु ने अपने समकालीन समय के अंदर लोगों पे क्या प्रभाव, क्या छाप छोड़ी होगी. And today also on Christmas, just think of Jesus Christ after 2,000 years, right? Still, he's given reverence all over the world. उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज क्रिसमस के दिन 2000 साल भी ईसा मसीह के प्राकट्य के बाद भी उनको इतना आदर और सम्मान दिया जाता है. So I wanted to give a title to this class. So the title for today's class is Lessons from the Other. Lessons from the Other, quote unquote, other. तो आज की कथा का जो मैं शीर्षक देना चाहती थी वो है कि अदर को कैसे बोलेंगे, मतलब दूसरों से, अन्यों से शिक्षाएं. In other words, someone outside of our group. मतलब एक किसी जो इस्कॉन के समुदाय के नहीं है या गौड़ीय वैष्णव समुदाय के नहीं है, उनसे क्या शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं. So let's see what we can learn today and how our bhakti understanding can be inspired by some of the words and teachings of this great bhakta from outside of our own tradition. तो हमारे परंपरा के बाहर से इन महान भक्त से हम क्या सीख सकते हैं, आइए देखते हैं. Srila Prabhupada used to speak about the great personal sacrifice, and Srila Prabhupada always called him Lord Jesus Christ. श्रील प्रभुपाद ने उन्हें हमेशा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट करके, लॉर्ड ईसा मसीह, लॉर्ड मतलब प्रभु ईसा मसीह करके संबोधित किया. And Prabhupada would speak about him in the same breath that he would speak about Haridas Thakur, our great Acharya of the Holy Name. He would often speak about them together. और कई बारी प्रभुपाद जी ने अपने व्याख्यानों के अंदर या वक्तव्यों के अंदर या लेखनी के अंदर जहाँ जहाँ हरिदास ठाकुर के त्याग का गुणगान किया कि उसी प्रकार सहनशीलता गुणगान किया, लगभग साथ में उसी के ईसा मसीह का भी प्रभुपाद जी ने जिक्र किया. They both made great personal sacrifices to spread love of God, to spread the holy name. तो उन दोनों ने भगवत शिक्षा को, भगवत प्रेम को बांटने के लिए अनेक प्रकार के व्यक्तिगत त्याग किए. So let's look at the example of Lord Jesus Christ and share some of his words. तो हम देखते हैं ईसा मसीह के कुछ शब्दों को और उनके कुछ उदाहरणों को. What was his message? It was a message of bhakti. उनका संदेश क्या था? उनका संदेश भक्ति का था. He instructed one should love the Lord our God with one's heart, soul and mind and love our neighbor as ourselves. उन्होंने सिखाया कि हमें भगवान को अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन से हमें उनको प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और अन्यों को अपने समान, अपने पड़ोसियों को या अन्य लोगों को, अपने पड़ोसियों को अपने समान ही उन्हें व्यवहार करना चाहिए उनके साथ. So does this remind you of the one verse in Bhagavad Gita that Krishna repeats, that he says twice? How important is this verse, right? तो ये क्या आपको भगवत गीता के किसी एक श्लोक की याद दिलाता है
जो भगवत गीता में श्री भगवान ने 2 बारी जिसकी उक्ति करी है, 9th chapter and 18th chapter. Man mana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaisyasi yuktaivam atmanam mat parayana. Man mana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaisyasi satyam te pratijane priyosime. तो ये 2 श्लोक 9वें अध्याय के अंदर 18वें अध्याय में एक ही श्लोक मतलब 2 बारी एक तरीके से भगवान ने बोला है, मन मना मत भक्तों से जो शुरू होता है। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me, thus you will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend. मुझ में अपने मन को लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और इस प्रकार निश्चित रूप से आप मेरे पास आओगे, क्योंकि और मैं इसका वचन देता हूं क्योंकि आप मेरे परम प्रिय, आप मुझे परम प्रिय हो। So Jesus said we should love our enemies. We should love our enemies. ईसा मसीह ने कहा कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। Do you feel like you have any enemies? क्या आप में से किसी को लगता है कि आपके कोई शत्रु हैं? Would that instruction help us in ISKCON today? क्या उनका ये आदेश हमें आज के परिप्रेक्ष्य में ISKCON में मदद कर सकता है? He said if someone slaps you on one cheek, you should turn the other cheek toward him so he can slap that one too. तो ईसा मसीह ने कहा कि यदि कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आपको अपना दूसरा गाल भी जो है उसके सामने रखना चाहिए थप्पड़ मारने के लिए। Funny, we were just talking about Amoga yesterday, right? He was slapping his face. This face offended Caitanya. Yes. So again, slapping. So this is such an extraordinary instruction, especially in that day and age when there was so much, partyism and, I mean, who can imagine what the culture was? Imagine such an extraordinary instruction. तो कल हम चर्चा कर रहे थे जब मीटिंग थी माता जी कह रही है अमोघा के बारे में। अमोघा जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की निंदा की थी और उस निंदा करने के बाद वो अपने गालों पे इसी प्रकार थप्पड़ मार रहे थे। And I've heard some religious people from other traditions make a comment on this, say, that's too much. It's too much to ask. Turn the other cheek, so to get that one slapped also, it's too much. तो ईसा मसीह की जो ये उपदेश है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल जो है करना, तो ये कितनी महान आदेश है। और उस समय के अंदर जब वहाँ का संस्कृति बहुत ही क्रूर थी, वहाँ बहुत युद्ध चला करते थे, आपस में लोग लड़ाई करते थे और जो अन्य समुदाय के अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि तो बहुत ही ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दो। And he warned about greediness. और उन्होंने लोभ से बचने के लिए हमको चेतावनी दी। He praised a poor widow who gave her 2 tiny coins. उन्होंने एक वृद्ध गरीब विधवा का गुणगान किया जिसने 2 अशर्फियां या सिक्के मोहरे मुद्राएं जो है दान में दी। That her offering from her place of poverty was more dear to the Lord than those who give a little bit and live in abundance. क्योंकि इसकी छोटी सी आमदनी से इसने इतना बड़ा दान दिया तो ये भगवान को ज्यादा प्रिय है उनके तुलना में जिनकी आमदनी बहुत बड़ी है और उसके मुताबिक वो बहुत छोटा सा दान देते हैं। So this is the story of the widow's mite, and once I saw a widow's mite was a tiny coin about the size of a chickpea, this big. That was the size of the coin. She gave her two coins. तो एक छोटा सा सिक्का था उनके पास में जो चने के दाने के समान छोटा सा सिक्का था। ऐसे 2 सिक्के एक बूढ़ी विधवा माता ने जो है भेंट में दिया, उपहार में दिया। So to me this is so similar to the story of Lord Ram chastising Hanuman. Doesn't it remind you of that? For dismissing the tiny spider, or maybe it was a squirrel, we don't know, right? और ये मुझे याद दिलाती है उस घटना की जब भगवान रामचंद्र ने एक छोटी सी गिलहरी के छोटे से मिट्टी के कणों के योगदान को ज्यादा महत्व दिया हनुमान जी के बड़े बड़े चट्टानों से या पत्थरों से भी। Right, the tiny spiders kicking up some dust to help build the bridge to Lanka, and Hanuman's, what are you doing? Get out of my way, तो वो जो छोटी सी गिलहरी थी वो छोटे छोटे रेत के कण ले जा करके उस पुल में डाल रही थी। तो हनुमान जी बोले, अरे तुम छोटी सी गिलहरी क्या कर रही हो यहाँ पे, हटो यहाँ से। So how dear someone is who gives their best.
तो भगवान को वो व्यक्ति कितना प्रिय है जो अपना बेस्ट, अपना जो सर्वोत्तम प्रयास है वो भगवान की सेवा में लगाता है. So what about the message of Jesus Christ when he's hanging on the cross? Inconceivable pain. Who can imagine the inconceivable pain of a crucifixion? Once Prabhupada went to stay in some, devotees had him stay in some monastery. There was a cross on the wall. He said, take it down. He couldn't even stand to see that cross, Jesus hanging on the cross. It was too painful for him. तो ईसा मसीह के क्या शिक्षा थी उस समय जब उनको सूली पे लटकाया गया. What is crucifixion? तो जब उनको क्रूसीफाई किया गया, सूली पे लटकाया गया, तो उनकी क्या शिक्षा थी. एक बार श्रील प्रभुपाद एक आश्रम में, मोनेस्ट्री में गए, तो वहां पे जीसस इसी प्रकार क्रॉस का चिन्ह बना था. प्रभुपाद जी ने बोला इसको हटा दो. कौन ऐसे देख सकता है जीसस इस प्रकार से ईसा मसीह को कितनी तकलीफ उस और उनको जीते जी उस सूली पे इस प्रकार से लटका दिया गया. जब He's hanging on this wooden cross with nails in his hands and feet, and he's saying, Father, forgive them. और उनके हाथों के अंदर और पैर के अंदर जो है कीलों से उनको जो है उस क्रॉस के ऊपर लटका दिया गया. और उस समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप इनको क्षमा कर दीजिए. Father, forgive them, for they know not what they do. क्योंकि उनको ये अज्ञानी है, अज्ञ है, इनको जानकारी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं. इसलिए कृपा करके ये नादानी में करें, इनको क्षमा कर दीजिए. So Srila Prabhupada also remembered the words of Jesus Christ. Maybe you've heard this story when Prabhupada was in Pennsylvania and the little child of Sally Agarwal and Gopal Agarwal, she was going to a Christian Sunday school, and when she saw Prabhupada, she called him Swami Jesus. The little girl called him Swami Jesus. तो प्रभुपाद जी को जब प्रभुपाद जी गोपाल अग्रवाल, सैली अग्रवाल के घर पे बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, तो उनकी जो छोटी बिटिया थी, पुत्री थी, वो शिला प्रभुपाद को पुकारा करती थी, स्वामी जीसस, स्वामी जीसस. And Prabhupada remembered the words of Jesus Christ. He said, from the mouths of babes, from the mouth of a child. अब प्रभुपाद जी को उस समय ये ईसा मसीह के इन शब्दों का कि हे भगवान क्षमा कर दीजिए का स्मरण आ पाया एक छोटी बच्ची से सुनकर. Even now we're hearing the mouths of babes, right? But he was praising. Yeah. So he was praising, Prabhupada was praising, and Jesus was praising the innocent faith and wisdom of a small child, right? तो ईसा मसीह व श्री प्रभुपाद जो है उस छोटी सी लड़की के नादान विश्वास की प्रशंसा कर रहे थे. What about the message, his message of inclusivity, when he instructed his followers, as you do unto the least of these, you do unto me. तो उनका इंक्लूसिविटी मतलब सबको अपनाना की जो प्रक्रिया है उसके बारे में संदेश था. Yeah, as you do, in other words, the way you treat the lowest person in society, that's the way you're treating me. तो उनका ये संदेश था कि जिस प्रकार से आप समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग के साथ में आप व्यवहार करते हैं, एक्चुअली वास्तविकता में आप उसी प्रकार मेरे से व्यवहार कर रहे हैं. So what does this mean to us today? You know, we saw in the Lila of Lord Caitanya Mahaprabhu, and the caste Brahmins became proud, became sectarian, right? The common people became more attracted to follow the broad, inclusive Prema Sankirtan of Lord Caitanya Mahaprabhu. तो हमारे लिए इसका क्या संदेश है कि जब चैतन्य महाप्रभु के समकालीन समय के अंदर जो ब्राह्मण थे वहाँ के वे बहुत ही अहंकारी हो गए थे अपने पद के, तो जो लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम संकीर्तन आंदोलन से ज्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि यहाँ जात पात इत्यादि की कोई बॉर्डर्स नहीं थे, कोई सीमाएं नहीं थी. So Jesus gave a very famous sermon called the Sermon on the Mount, and I'll tell you what he said there. तो ईसा मसीह ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया, इसको बोला जाता है पर्वत पे दिया गया संदेश. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Those who are humble, they will inherit heaven." तो जो कि नम्र होते हैं वो ही भगवान के धाम को जा सकते हैं. Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
those who suffer in grief, they will be comforted. Comforted. तो Right? जो दूसरों के दुख को देखकर संवेदनशील होते हैं, सहानुभूति रखते हैं, दुखी रखते हैं, उनको वास्तविकता में जो है असली वास्तविक सुख या वास्तविक आराम प्राप्त होगा. Blessed are the meek or humble, because they will inherit the earth. और जो नम्र हैं, जो दीन हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो वास्तविकता में इनहेरिट द अर्थ. The whole world will be theirs. हाँ, इसका मतलब पूरे संसार पर वो एक प्रकार से राज्य करेंगे या विख्यात होंगे. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. और वो लोग जो righteousness, सत्कार्य के लिए, सत्कार्य के लिए, सत्धर्म के लिए, यदि वो भूख प्यास इत्यादि सहन करते हैं. Honesty, truth, righteousness, right? Okay, and he says, for they will be filled. They're hungry, they're thirsty for goodness. They will be filled. तो जो भूख प्यास सहन करते हैं सत्कार्य के लिए, अच्छे उनके लिए, तो वो जो है वो सौभाग्यशाली होंगे बेसिकली. And yes. So I have one other thing I want to share, and then we have a beautiful film to show you. Another thing he did, sometimes people call him the rebel Jesus. He was revolutionary. So I'll tell you what he did. तो कई बारी लोग ऐसा कहते हैं कि जो ईसा मसीह थे बहुत ही क्रांतिकारी थे. तो उन्होंने ऐसा क्या क्रांतिकारी कार्य किया, माता जी कह रही है, मैं आपके साथ जो है साझा करना चाहती हूँ. He went into the temple of the Lord, and there was so much business dealings going on. People were selling pigeons, and there were money lenders, and all kinds of business going on in the temple. तो एक बारी वो भगवान के मंदिर में गए और वहाँ पे बहुत सारे व्यावसायिक कार्य चल रहे थे. लोग कबूतर बेच रहे थे, कुछ लोग ब्याज पे पैसा दे रहे थे, कुछ लोग ले रहे थे. तो ऐसे अनेक प्रकार के व्यवसाय जो है मंदिर के अंदर, उस मंदिर में चल रहे थे. So he was a small child at that time, like 12. How old are you? How old are you? 12? I was just going to say, I think he was 12. So he went into the temple, and he just took his arm and he turned over all those tables. He just threw them over. So everything fell on the floor. तो जब ईसा मसीह 12 साल के थे, क्या नाम है? शिवम. तो जैसे शिवम यहाँ बैठे, ये भी 12 साल के थे. तो जब वो ईसा मसीह लगभग 12 साल के थे, तो ऐसे मंदिर में गए और जब देखा उन्होंने दृश्य को, तो उन्होंने अपने हाथ से जितनी भी वहां मेज थी उन सब के ऊपर को ऐसे फेंक दिया. तो जो भी सामान था वो सब फर्श पे गिर गया. And he said, my Father's house is a house of prayer, but you have made it into a den of robbers. तो कह रहे हैं कि मेरे जो पिताश्री का घर है, यानी जो मंदिर है, ये तो एक प्रार्थना का स्थल है, लेकिन आपने इसे एक लुटेरों का स्थल बना दिया है. Yes, so we have a very beautiful film to show you, but I want us to say one other thing about Srila Prabhupada. Once Srila Prabhupada was in his room thinking. तो एक प्रभुपाद जी के बारे में एक बात साझा करके फिर एक बहुत सुंदर फिल्म आपको हम दिखाना चाहते हैं. तो प्रभुपाद जी एक बार अपने रूम के अंदर थे, अपने कमरे में थे, अपने कक्ष में थे. He said, in India they are calling me CIA. और वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर लोग मुझे CIA, यानी जो अमेरिका की जासूस कह सकते हैं, जैसे भारत में रॉ है, उस प्रकार से जो वहाँ की गतिविधियां, जासूसी गतिविधियां देखती है, बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे से लेबल किया कि मैं CIA हूँ. But he said at that time, but I am so grateful to America. They have not crucified me. तो प्रभुपाद जी बोले कि भारत में मुझे ऐसे एक अमेरिकी जासूस के रूप में या अमेरिकन एजेंट के रूप में लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं अमेरिकियों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार सूली पे नहीं चढ़ाया. Such an amazing statement. So I hope we're not too much over time, but we have a very beautiful film to show you. This was a conference that was held at Harvard University to celebrate ISKCON's 50th anniversary. And many of the scholars you see in this film are Christian scholars who have studied ISKCON from outside. And you'll also see scholars who've come up in ISKCON as scholars like Radhika Raman Prabhu. And I think some of this, you met Shonaka Rishi Prabhu. He's in this film also. So, yeah, let's see how our time allows. But
It's about 15 minutes. So तो लगभग 15 मिनट का वीडियो है, तो हम चलाएंगे। अभी 8:55 हुआ है, 10 ही मिनट ओवर टाइम जाएगा। तो ये इस्कॉन की जो 50वीं वर्षगांठ थी 2016 के अंदर, तो ये फिल्म बनाई गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर अनेक क्रिश्चियन विद्वान जन हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने इस्कॉन को स्टडी किया है बाहरी दृष्टिकोण से, जैसे हम लोग अंदर से स्टडी करते हैं। तो उनके कुछ इस्कॉन को लेकर के मत हैं, और उसके साथ कुछ इस्कॉन के स्कॉलर्स विद्वान जन जैसे राधिका रमन प्रभु और शौनक ऋषि प्रभु। So one of the scholars interviewed here at that time, he was the chairman of the Harvard University Center for the Study of World Religions. तो इनमें से एक जो विद्वान हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो अन्य धर्मों को पढ़ने का जो केंद्र है उसके हेड थे, उसके मुखिया प्रोफेसर। Yeah. So he's a Jesuit priest and a scholar who appreciates ISKCON. So तो वो भी ISKCON के अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई थिंक इंग्लिश के अंदर होगा, तो हिंदी में सबटाइटल्स। And I just wanted to say one other thing. Be very careful to listen carefully. And at the very end of the video, there's something very special. So be careful to listen to the words of this one scholar at the very end. And if you don't get it, I'll repeat it. तो आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे नीचे हिंदी में सबटाइटल भी आएंगे, और इस वीडियो के अंत में जो विद्वान बोलेंगे उनके संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। So will you be stopping it and starting it for translation, or? No, Hindi subtitles. Oh, perfect. Okay, good. Can you make it a little louder, maybe? Very nice to have you all here on this occasion. Welcome to the Center for the Study of World Religions in Harvard Divinity School. For the last 3 days, there's been a special academic conference held at the Center for the Study of World Religions at Harvard University, where approximately 35 scholars have come together to look at the theology of the Krishna movement, to look at sociology, history, etc. And it is a very significant event because it's at the occasion of the 50th anniversary of the Krishna movement being brought from India to the West by Swami Bhaktivinoda Prabhupada. And I think it's really denoting the importance that हरे कृष्णा। ये गूगल के हिंदी ट्रांसलेट जो क्या बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक कैप्शंस है, हिंदी कैप्शंस। तो कई बिल्कुल कुछ उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, तो थोड़ा आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी उनको समझते समय। our community has had over the last 50 years. What are the challenges that it's faced and it's facing in the future? A lot of questions are coming up in terms of the balance of tradition and modernity, sociological questions about how do you take an ancient Indian cultural religious movement, bring it into the West, and then from there all around the world, and how does it adjust and balance the different kind of modern impulses with tradition? And some very deep and important questions have been looked at. The importance of this conference is, I think, really deep. It's deep because it brings scholars on the Bhakti traditions and scholars from the Bhakti traditions together. When the organizers of the conference came to consult me about the possibility of the Center for the Study of World Religions hosting a 50th anniversary academic event for ISKCON, it seemed to me that it was a very appropriate way to go for us to provide hospitality for the event. So I think if Prabhupada himself came to Harvard Divinity School, it's very appropriate that 50 years later we welcome his children and grandchildren back for an event on our campus. In May 1968, Srila Prabhupada gave a lecture here at the Divinity School in this very room. I was here. As I rushed to the library through these corridors, when I passed by this very room, the sight was startling. On the table in front of the room and in saffron robes, there sat a man in a modified Padmasana yoga pose. It stopped me in my tracks. At the door, I stood. I'd never seen anything like this before, not at Harvard.
It doesn't happen here. He was talking about Lord Krishna, the Bhagavad Gita. He talked about peace, all serious subjects for me. Curiously, though, alongside these serious subjects, he was also talking about delight and happiness. Most of the members of ISKCON in 1966 knew almost nothing about the early Caitanya devotional movement and its participants, or about the later figures who shaped the Vaishnava tradition of Bengal that in September of 1966 laid the foundations for ISKCON. That is to say, they knew almost nothing about Bhaktivedanta's background or where he got his teachings and practices. As a historian, we have to look at the historical situation. And the fact is that there has been no clear parallel to Prabhupada's achievement. The most obvious parallels would be Jesus' founding of Christianity and Muhammad's founding of Islam. Jesus' ministry, however, was among his own people and his own culture, and he had the help of adults, his own age, his disciples, to carry his movement forward. The same thing can be said of Muhammad, who had from the beginning followers from his own culture and his own family to help him establish his movement. Prabhupada, by contrast, was one elderly man in a totally unfamiliar culture with no one else from that culture to support him, and a group of followers initially at benchmark 0. Moreover, unlike many earlier missionaries from Hindu India, he was determined to establish not just an outpost of Hindu devotion to Krishna, but an outpost of Indian Bengali culture as well. He wanted to carry a whole cultural tradition across a huge cultural separation, and he set out to do it himself. He thus not only taught his followers how to practice devotion to Krishna, the Gaudiya Vaishnava way, he also taught them how to cook, how to dress, how to conduct themselves by doing these things. And of course, he taught them Sanskrit, he taught them texts, and he taught them how to teach all of these things to others. He was, in short, a one-man channel for an entire cultural religious tradition, starting when he himself was already 70 years old. How did this work out? Time will, of course, tell, but here we are, 50 years down the road, and looking ahead as well as back. And I might add in closing, ISKCON has on the record done at least as well as Christianity and Islam did in their first 50 years, because both at that point were having serious problems. So may the discussion begin. Hari Bol. Interfacing with academics who study religious organizations and know Gaudiya Vaishnavism and know Hinduism and know about world religions, their perspectives enable us to look at ourselves with a critical eye. How can we look with objectivity to how we're doing as a community? And in many ways, compared to other religious organizations, we've done some very wonderful things, but in many ways we've fallen short. And certainly in the first 3 years of our society, and these are things that are being discussed in some of the papers, our focus on transcendence, our focus on going deep in our spiritual, personal, and community led us to minimize developing healthy families and minimize the need for developing healthy communities. And especially at the 50th anniversary, it's a time for us to stop and to take a deep breath and to look back and assess ourselves. You might say there are two kinds of challenges facing the community now. One is inside ISKCON itself. How is it possible as younger people who not only never met Prabhupada, but were introduced to the faith by people who had never met Prabhupada, when young people bring their own talents and their own questions in the 21st century to ISKCON and to the Bhakti movement of Vaishnavism, how do those new questions, new sensitivities, new attitudes toward culture, toward gender, toward personal authenticity, how do those get factored in? For me, this conference has been really integrating in a very significant way. On the one hand, I'm here with people who I read about growing up as a child of Krishna devotees. People like Tom Hopkins and Ravindra Swarup Prabhu and Urmila Devi and others, Anuttama, read about them in Prabhupada's biography and in his conversations and so on.
And then a whole number of people whose writing formed the main diet as I grew as a scholar. And people like Barbara Holdridge and David Haberman and Frank Clooney and me. The external challenges, I think, would be the same faced by people of Jewish or Christian or Muslim tradition. How to keep a credibility, authenticity in relationship to one's own faith tradition, while also showing a true openness to the other. And that in a century in which we're seeing there's so much religious conflict, suspicion, hesitation, how to cultivate a true Vaishnava ISKCON identity that is genuinely open and willing to learn from the other traditions. In all our traditions, we face this problem. What does it mean for a Christian to learn from a Hindu, or a Hindu to learn from a Buddhist, or a Muslim to learn from a Jew? There has to be more than lip service, but it's actually some transformation of consciousness, not simply from within the tradition, but across the religious boundaries as well. I got off to him and I said, Reverend Cracknell, and he said, Cracknell. No, I didn't even know his name. I couldn't even pronounce his name. So immediately we were into a dialogue. I see the Hare Krishna movement as a great catalyst for moving people out of their little theological boxes that they inherited as children, Reformed, Catholic, Methodist, Baptist, whatever, into a new time where we follow truth as each of us sees it, and we discuss these things without walls. And he comes to Ireland and lives on an island in the middle of the lake for a week with Hare Krishnas. He couldn't even get off, you know. Dialogue is about removing misconceptions. And then, when you've removed ignorance, there's trust. And suddenly you can do things together. I can't underestimate the service that Kenneth did by lecturing to various groups of devotees. Like Nutma said, we very consciously started to think, how do we become self-critical? And the best way, get people who are friendly, but, you know, honest. And he came in and he helped us reflect us back to ourselves and how to engage with others. For me, it's been a very illuminating conference. I mean, I'm a scholar of 16th century Gaudiya traditions within my relationship to Krishna Bhakti traditions. I've encountered and known people from ISKCON from many different contexts through the years, but for me, it's just wonderful to sort of get the scope. I see ISKCON as having matured. It's gone through painful moments, which all of us growing up have to do. But its maturation is in its capacity as an institution to really engage with other faiths, but also to engage with its own householders in ways that it couldn't have 20 years ago. It has leadership who, in fact, can converse with the very best of leadership in the world and other religious traditions. So it has that capacity today it wouldn't have had when the devotees were young and had trouble even pronouncing the Sanskrit words. I've been telling people in ISKCON ever since I first got my chance to say anything, do your history, do your theology, work out your system. Don't let it just go by. Do it now so that you don't run into trouble in the future. And Shaunako, first thing I ever wrote for Shaunako was saying exactly the same thing. Tom was one of my gurus. He was one of the first academic directors of the centre in Oxford. He came up to me one time and came into my office and he said, Shaunaka, I heard Prabhupada say that cleanliness is the mark of a Vaishnav, the mark of a gentleman. And I was just looking at him kind of, he's sharing a moment of remembrance of Prabhupada. And then he said, have you seen your kitchen? I do wonder whether somebody like me can really understand completely the ecstasy of identification with devotion, and I really want to. And so, you know, for me to hear the devotees talking as well as scholars is very important. I'd like to position myself sort of inside the movement and with a loving relationship rather than outside trying to pick holes.
Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya. The Rasa Lila, the dance of the essence, the dance of life, in which Krishna is superimposed between each of the gopi girls. So he's multiplied himself, so he's present to every one of them. It can be understood on several levels. One is the spiritual level, and that's the level of where the pure devotee seeks to have that dance, that union, that hopes to have that union with Krishna. I think it also could be symbolic of the way in which ISKCON as a movement is understood and what its role can be. If devotees understand themselves, not just standing in a circle with them alone, but with people from other parts of the world and people who aren't religious at all, but people who can find joy in being together and celebrating together, the Rasa Lila could be a wonderful message for peacemaking in this world in which we find conflict with people with whom we disagree. ISKCON can play a very valuable role and has wonderful leaders now who are trying to promote that kind of conversation where we have a Rasa Lila and it's a dance and it's a joyful dance in which we, out of all of our faiths, are appreciating God together by the way we live our lives. I want to encourage ISKCON to write its इसको ध्यान से सुनिएगा. I want to encourage ISKCON to do its theology. But I mostly want ISKCON just to stay with its bhakti thing. It's really good stuff. And it will get you there. That's all I have. He said, just stick with this bhakti thing. It's really good stuff, and it will get you there. Haribol. Thomas J. Hopkins. Yes, he ये recently थॉमस जे tested. हॉपकिंस थे जिन्होंने गीता के अंदर भी आप इनका कोट पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो वो कहते हैं जस्ट स्टिक विद दिस भक्ति स्टफ. हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये भक्ति बहुत अच्छी चीज है और आप सब भक्ति के साथ रहिए. एंड श्रील प्रभुपाद है ना, उनके लिए ना भक्ति जो है आपको भगवान के धाम निश्चित रूप से लेकर के चली जाएगी. And then he said, Haribol. और उसके बाद उन्होंने बोला हरिबोल. थॉमस जे हॉपकिंस श्रील प्रभुपाद जी के समकालीन स्कॉलर हैं और प्रभुपाद जी की किताबों के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर टिप्पणियां लिखी है और जगत में भी बहुत जाने जाते हैं अपने स्कॉलरशिप के लिए. Thank you all so much. And this film is available on YouTube. So if you want to show it to friends, family, the world, it's very, very powerful. Things that we could never have said about Prabhupada, these outside scholars are saying. तो ये जो फिल्म है YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं. जो बातें हम श्रील प्रभुपाद के बारे में शायद नहीं कह सकते थे, वो बाहर के स्कॉलर्स जो हैं, विद्वान जन हैं, श्रील प्रभुपाद के बारे में कह रहे हैं. हरे कृष्णा. Thank you. आप सबका बहुत धन्यवाद. हर गेज रुक्मिणी माता जी की जय. We want to thank Mataji for your wonderful association.